It's programmed to continually seek more and more and more. आप देखो जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आपको नजर आती हैं, इन इंसान ने पहिया बनाया, उसने ये पहिए को बनाने से इसकी ट्रॉली बन सकती है, इसकी गधा गाड़ी में लग सकता है, घोड़े गाड़ी में लग सकता है, इसका टांगा बन सकता है, उसके बाद उसने पहिए से आज चलते चलते गाड़ी बन सकती है, उसके बाद उसने गाड़ी से हवाई जहाज भी बन सकता है, एंड चलते 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 थिंक अबाउट दिस बाय द वे, आज तकरीबन 25 साल पहले जब मोबाइल लॉन्च हुए थे, if you remember पाकिस्तान के अंदर नए there were a couple of companies who came, और उसको जैसे लैपटॉप का बैग होता है, इतना बड़ा एक बैग होता था, उसमें बैटरी कंधे पे, Parktel, Instaphone, ये कंपनीज आई थी, and they used to have these huge मोबाइल फोन्स, और कनेक्शन was मिनिमम उस जमाने में 70,000 रुपए का होता था, ओके, और इन कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो रास्ते में कहीं इट्स लाइक मार्केटिंग के लिए वो खड़े होते थे, तो लोग देखो उसका मोबाइल फोन है, मोबाइल नहीं कहते थे, इंस्टाफोन या पार्टेल या इंस्टाफोन जमाने, राइट, इट वाज सच अ बिग थिंग, और आज क्या हाल है, everyone has it. The smartphone that you have in your pocket is far more powerful than the supercomputer that people had maybe 30 years ago, 40 years ago. Okay, so it's unconsciously इंसान जो है वो खूब से खूब तर, बेहतर से बेहतर, खूब से खूब तर की तलाश हमारा मशगूल है. Okay, generates, stores, distributes and transmits energy. Okay, so unconscious mind. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि मिसाल के तौर पे रमजान के अंदर रोजा रख लिया, सहरी में आँख नहीं खुली, जब आँख खुली तो अजान हो गई थी, रोजा भी रख लिया, अब जब सुबह में उठे तो 10 बजे थे और भूख से बुरा हाल, हलक प्यास से खुश्क, इफ्तार का टाइम देखा तो 7:30 बजे, ओके, एंड देन थोड़ी देर के बाद यू फाइंड भूख भी गायब, प्यास भी सेट, and the whole day you are totally energetic, you keep doing your work until 7:25. अब वो जो आखिर के 5 मिनट है उसमें भी यार ये मौलवी साहब अजान नहीं दे रहे, अब पहले खुद कर लेते ना उसके बाद अजान देते हैं, okay, and we have all of those ideas coming, okay, और वो आखिरी के 5 मिनट, but the question is how did the whole day you remain energetic, what happened? जो unconscious mind था, it supplies you that energy जो के अंदर उसने स्टोर की, it reserves that energy. हमारे लैपिड्स को एक्टिवेट करता है. Okay, so इसका भी एक experience मैं आपको अपना personal experience. My father, he was hospitalized during the last 7 days of his life, और I think it was 5th day कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, and on the 5th day he was suddenly perfectly okay. It's perfectly okay. हमने उनको देखा नहीं, यार ये तो बिल्कुल ठीक है, ये चलो यार अबू को घर लेकर चले, बिल्कुल सही है माशाल्लाह, एकदम बात कर रहे हैं, सब कुछ सेट एकदम से. तो उस वक्त हमारे जानने वाले डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कामरान, don't take this as a good sign. I did not understand this, but on the next day, just a day after that, my father passed away. It was like वो जो last reserves energy के थे, his unconscious mind supplied that. Okay, and then वो reserves खत्म हुए and that was it. Do you understand? Now here's an important thing I want you to understand. Next time जब तबीयत खराब हो आपकी, and suddenly अगर तबीयत एकदम सही हो, you know what to do? यार भाई माफ कर देना कि मैंने देखा और तस्बीह पकड़ो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह. Okay, you get this? Be ready. Okay. Okay. This memories with unresolved negative emotions. Unconscious mind represses memories and with unresolved negative emotions. Okay, and this is what you will find जब हम आगे आके timelines के ऊपर काम करेंगे. Unconscious mind, one of the things it does is जो unresolved issues होते हैं इंसान की ज़िंदगी के, it represses them. जो memories होती हैं, it represses them. And sometimes ऐसा हुआ कि बड़े अच्छे मूड में बैठे हुए थे और everything was going well, और suddenly अचानक से दिमाग में कोई पुरानी चीज़ फाइल में सामने खुल गई. मैंने कहा यार ये कहाँ से आ गया?
right? एकदम डिप्रेस हो जाता है। Yeah, exactly. ये कहाँ से आ गया? हुआ क्या कि unconscious mind was trying to solve that problem for years, but it was unable to. And suddenly उसने आज देखा वो जी आज साफ फारिग है। तो ये सर ये जरा फाइल देखिएगा, okay? And that's what unconscious mind does. इस मूड चेंजेस पे मेडिसिन की 25 साल्स हैं। 25? साल्स हैं मेडिसिन से। Okay. इस मूड चेंज स्विंग्स के। Okay. I can't comment on that. I'm not a doctor, so. So we'll be working on this, inshallah, and you will see how easily you can actually help a person resolve these kind of issues. Okay. Now, then unconscious mind contains your memories, emotions, thoughts, feelings, and resources. Does all that you do. Unconscious mind does all that you need to be alive the best way your unconscious knows. So for example, you're beating your heart, you're digesting your food, you're running the blood in your body, all of these functions are happening unconsciously, okay? And these are the functions necessary to keep you alive, okay? Then it contains your memories, emotions, thoughts, feelings and resources, same thing. हमारी जो memories होती हैं, positive, negative, they just come up automatically, okay? And these are all at unconscious level. So you, for example, you meet a friend after a long time and you see that friend and suddenly your good feelings, your old memories, files एकदम से खुल जाते हैं. Sometimes you listen to a particular song and the moment you listen to that song, it reminds you of a particular experience. We call them an anchor and we'll talk about that later. Okay? Similarly, all change takes place at the unconscious level and then we become consciously aware of it. All learning takes place at unconscious level. All change takes place at unconscious level. And last, unconscious mind beats your heart, keeps you breathing, keeps you alive the best way your unconscious knows. And I don't think it needs any explanation. ये नीचे एक छोटी सी तस्वीर है, घोड़े के ऊपर जॉकी बैठा है. इसकी मिसाल इस तरह से है. कई साल पहले मैंने एक कोर्स अटेंड किया था. It was a course on purification of heart, purification of soul. उसके अंदर जो आलिम थे उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी थी. उन्होंने ये कहा कि देखो जो इंसान की नफ्स इसका मामला ऐसा है कि जैसे एक घोड़े को जब कोई ट्रेन करता है तो जो ट्रेनर होता है वो क्या करता है कि घोड़े के ऊपर बैठ जाता है बगैर सैडल के. तो अनट्रेन्ड घोड़ा है वो उसके ऊपर बैठ के और उसको कस के यूं पकड़ लेता है. अब जो घोड़ा है वो कोशिश करता है उसको गिराने की. अगर घोड़ा गिराने में कामयाब हो जाए और ट्रेनर जो है वो अपने हाथ खोल दे, यानी अपना स्टेमिना उसका खत्म हो जाए, वो गिर जाए, तो घोड़ा जो है वो हावी हो जाता है. It's like आज मुझे इसको गिराने में 10 मिनट लगे, ऐसे ओके 10 मिनट का खेल है, मे बी कल 15 मिनट की बात होगी, बट घोड़ा जो है वो हावी हो जाता है. बट ऑन दी अदर हैंड अगर वो ट्रेनर उसको पकड़ के बैठा रहे और जब वो हिल रहा होता है तो इट्स लाइक उसको सीने पे भी जख्म आएंगे, उसके पैरों में भी चोट लगेगी. मगर अगर वो उसको पकड़ के बैठा रहे और घोड़ा हार जाए, घोड़ा थक जाए, घोड़ा रुक जाए, फिर वो घोड़ा उसका हो जाता है. Do you understand? Then he owns that. And he said in exactly the same way you train your nafs. कि जब आप अपनी नफ्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, उसको प्यूरिफाई करना शुरू करते हैं, तो नफ्स जो है ना वो आपको दूसरी चीजों की तरफ, हम अगर साइकोलॉजिकल टर्म में, it's your ego. Your ego will, direct you in other things. So when you're practicing these things, you're trying to make your life better, make your skills better, make yourself better. Your ego will try to stop you from doing things. If you stop in the middle, it will become even difficult next time. But if you persist, you'll find it will become easier. Do you understand? In exactly the same way, when you are taming your unconscious mind, the same process works. That's the reason why we have unconscious mind is symbolic. Okay? Kelly, let's take a break here. If you have any question about this, you can ask before we take the break. Any question? सर इंफॉर्मेशन कोई और ज़हन डाल सकते हैं दूसरे के ज़हन में, जैसे मैं आपके साथ मैं भी आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं आपके ज़हन में इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ, तो बिल्कुल डाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the unconscious mind wants to protect us Yes. in the best way, then why do we experience negative emotions? Negative emotions because unconscious mind suppresses memories Okay. and resolve issues.
An unconscious mind is a responsive mind. It does not care whether something is good or bad, real or artificial. It responds. It takes It's because it's one of the functions of the unconscious mind. I mean, I have a question regarding stories. I mean, the best way to communicate is through stories. People. I'm not saying the best way to communicate. One of the most effective One of the ways. most effective way. So, do these stories need to be true? No. Not necessarily. necessarily. आजकल वो नहीं जिसे आप कहते हैं हिकायतें वाली जो चीज़ होती हैं. Okay. However, the stories that I'll be sharing with you from my life are true stories. They don't have to be true. If you're working with a person, you can be making up a story according to the person's need. You can be, formulating. There are specific, courses for teaching you how to create stories. Okay, लेकिन stories doesn't have to be true. The answer to your question is no. Sir, may I add something to his question? Sure. अक्सर क्या होता है कि इवन ट्रेनिंग्स जब हम दे रहे होते हैं तो वी मेकअप स्टोरीज क्योंकि हमें अपने जो है किसी भी टॉपिक से उस चीज़ को रिलेट करना होता है और जब हम स्टोरीज सुनाते हैं तो बंदा जो है वो एक्चुअली उसको अपने अंदर प्रोसेस कर रहा होता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करना शुरू हो जाता है तो दिस इज हाउ स्टोरीज Yeah, we'll talk about that later. You'll understand. जब हम language के ऊपर आएंगे, Is that me? एक story भी थी, is that me? एक पेशेंट सब्जेक्ट होता है, वो एक बुक पढ़ रहा होता है, उसमें जो कुछ भी हो रहा होता है वो कहते हैं कि हाँ ये मेरे साथ ये भी हो रहा है, मेरे साथ ये भी हो रहा है, मेरे साथ ये भी हो रहा है. ये कुछ stories इस तरह की होती हैं. Because unconscious mind applies to say. तो इसके बारे में ये स्टोरीज पढ़ने में ये भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई मैं इसको अडॉप्ट होने करूँ. Yeah, you like not everyone is skilled in that area. Okay. I mean, I can understand that if the story is made up, then you have to be really good because Yes. that person may just say it from your body Of language. course. This is why telling your own story is the easiest and most effective. Exactly. You don't have to think इसके बाद क्या था. You don't have to make things up, and then you are more emotionally involved with them. As a trainer, let me tell you this. If you're making up a story, you will not have emotional involvement with that. It will be a faking. You'll be faking it. You'll not have the real intensity. But when you're telling your own story or something that you have personally experienced, objective हमेशा NLP में ये हम आगे बात करेंगे इस पे briefly. मगर जब भी किसी चीज़ में देखो ये आपका objective क्या है? What's my main objective behind telling this story, for example, as a trainer? So my objective is to, for example, to inspire people. Okay, where can I bring that inspiration from my personal experiences? Rather than एक चीज़ जब मैंने when I started training तो मेरे साथ शुरू में था कि I used to tell them it's like अमेरिका में यूँ हुआ, इंग्लैंड में यूँ हुआ, तो जापान में तो लोग हमारे यहाँ पता है how they respond. हाँ ये तो अमेरिका में हो सकता है, ये तो जापान में हो सकता है. That's when I started using my own examples. मैं इस मुल्क का एक middle class family से ताल्लुक़ रखने वाला एक इस शहर का like आदमी हूँ और this is what I have done. Then I have over the years पिछले 19 साल में इतने लोगों के साथ काम करके लोगों की stories यहाँ पर हमारे मुल्क में एक से ज़बरदस्त story आपको मिलेगी, एक से एक ज़बरदस्त सच्ची story मिलेगी. Yes. इसी में जो है कि sometimes क्या होता है कि even when we're telling our own stories, लेकिन हम उसे जो है express properly नहीं कर रहे. यहाँ पे हम उसको properly act नहीं कर रहे. जैसे अभी आप different stories बता रहे थे, तो आप जो है different images को like pop up कर रहे थे, हमारे सामने act कर रहे थे to show something. तो अगर हम वो नहीं करते तो it also doesn't affect the other person. That's another thing. That's storytelling is another art. Making story is one thing. Telling a story is another thing. For example, it's like movie का जो writer है, he is not the actor. The director is not the producer. So these are all different areas. Writing up a good story and demonstrating in that story, or acting at that story out, these are all different things. Okay? So, but these are all based on skills. By the way, we are on break right now. Okay. Pauses. Please. Press that button.